Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. सैटेलाइट मोशन करेंगे। मैं यहाँ पे सैटेलाइट्स मोशन लिख रहा हूं, लेकिन द टर्म इज सिनोनिमस विद प्लैनेटरी मोशन ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि प्लैनेटरी मोशन नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू प्लैनेटरी मोशन, बट मैं सैटेलाइट के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट यूजिंग द सैटेलाइट। Fine. So first we are considering circular orbits. So see, suppose this is Earth and a satellite is moving around the Earth. Mass of satellite is m, mass of Earth is me. The distance from center of Earth to satellite is r. Fine. Now see, Siddharth, I don't know whether you know this or not, because I haven't taught you circular motion, and if you have a knowledge of circular motion or not, I'm not sure. But one of the things that I like to tell you, that in circular motion, if there is a circular motion going on, then Fc is equal to mv square by r or m omega square r. Fc is called as net force towards center, which is also known by the name centripetal force. Yes. So if a circular motion is going on, then if you can find out the net force towards the center, then that will be equal to the mv square by r or m omega square r, always. Yes. So on this satellite, there is only one force that is acting. And what is that force? That is the attractive force of the Earth. And this force Fg is given by G me m upon r square. And this force is towards the center. So this becomes the centripetal force. And since this force is towards the center, this is the centripetal force. This should be equal to m, mass of the satellite, v square upon r. Okay, that is radius of circle. So this r power gets cancelled out, m, this gets cancelled out. So velocity is g me upon r under root. Okay, so we represent this by v naught, and we call this as orbital velocity. That is the velocity of a satellite in a orbit. What it's that? Yes. And this velocity is not dependent on the mass of satellite, but this velocity is dependent on mass of Earth. Right. So if a planet is heavier, then the velocity of a satellite orbiting it will also be more for the same value of r. So now if I ask you, I got this orbital velocity. Now if I ask you, what is the time period of revolution? Revolution means the time taken to complete one circle around the planet. So can you tell me what is the time period of revolution? 2 pi upon omega, or I can write 2 pi r upon omega r, or I can write 2 pi r upon b, because b is equal to omega r. So this is like perimeter, and v is the speed. I can say that time period will be 2 pi r upon g me upon r under root, and this is r. Let me make this small r. So this will be equal to 2 pi r to the power 3 by 2 under root g me. This is the time period. So this will be the time in which it covers one revolution around the planet. Got it?
Yes. Now, this satellite will have two types of energy. One is the kinetic energy. What is the formula of kinetic energy? Half mass of the satellite v square. So kinetic energy, I can write half mass of the satellite, and velocity is gme by r under root. So this becomes gme by r. No. Yeah. So this becomes half m, or I can write half gme m upon r. This is the kinetic energy. Another energy is called as potential energy. Potential energy of the satellite, that is minus gmem upon r. This is the potential energy. So what is the total energy of the satellite? Total mechanical energy of the satellite, that is kinetic energy plus potential energy. That is the total energy. So total energy, Siddharth, you will see that kinetic energy is plus 1 by 2 gmem by r, and potential energy is minus gmem by r. So total energy comes out to be minus 1 by 2 gmem upon r. So you will realize here a very important thing, that kinetic energy, the magnitude of kinetic energy and the magnitude of total energy is same, but opposite in sign. And this is equal to magnitude of potential energy by 2. This is a very important statement. In planetary motion, magnitude of kinetic and total energy is same, and this is half of the potential energy. So in some question you will be given potential energy, just half it, and you will get the kinetic energy and the total energy. Kinetic energy will be positive and total energy will be negative. Right. So can you tell me one thing, Siddharth, that suppose if a planet and a satellite have infinite separation between them, then what will be the potential energy? 0. If two bodies have infinite separation, then potential energy is 0. So in that case, total energy will be equal to kinetic energy. Fine. And kinetic energy is positive. That is, in that case, total energy will become positive. A satellite will escape the gravitational pull of a planet if its total energy is greater than equal to 0. जब तक ये नेगेटिव होगा, टोटल एनर्जी इज लेस देन इक्वल टू 0, वो प्लैनेट, उस सैटेलाइट जो है प्लैनेट के चारों तरफ घूमता रहेगा. ठीक है. इफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ टोटल एनर्जी इज लेस देन 0, बाउंडेड ऑर्बिट. If total energy is greater than equal to 0, unbounded orbit, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है. एग्जैक्टली escape कर गया, मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन हो गया. और पोटेंशियल तो, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, टोटल एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं. आपको ये देखना है कि आप उसको इतना काइनेटिक एनर्जी दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए. मतलब टोटल एनर्जी जो होना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तब वो अनबाउंड हो जाएगा. लेकिन यदि आप टोटल एनर्जी नेगेटिव रह गया तो फिर वो घूमने लगेगा. तो यदि आपने एक रॉकेट को भेजा, लेकिन उसका आप उस रॉकेट को इतना वेलोसिटी नहीं दे पाए कि वो धरती का स्केप कर सके और मार्स, ऐसे इंटरप्लैनेटरी मोशन दूसरे तरीके से होता है. ठीक है. लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके पास किसी दिन ऐसा टेक्नोलॉजी आ जाता है, अभी ह्यूमन बींग्स के पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि एकदम सीधा फायर की और धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ के और वो मार्स के ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर कर गया, ऐसे नहीं होता है. पहले हम क्या करते हैं कि पहले धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है, और जिस टाइम पे मार्स और अर्थ क्लोजेस्ट आते हैं उस टाइम पे ट्रांजिट कर देता है ऑर्बिट को. एक रॉकेट फायर होता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेलोसिटी देके
ट्रांजिट कर देता है उससे एक के ऑर्बिट से। सो ऑलवेज द मार्स मिशन जब भी होगा ना, तो वो गैप होगा 5-6 साल का गैप होगा जब मार्स और अर्थ क्लोजेस्ट आते हैं, ठीक है। तो तभी किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी लिमिटेड है और उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे वो मतलब कि रॉकेट इसी टाइप का बना सकते हैं कि मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस ही भेज सके, तो वो अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है। एंड द मोमेंट मार्स कम्स क्लोजेस्ट, रॉकेट फायर करते हैं, अर्थ से बटन प्रेस करते हैं, रॉकेट फायर होता है और वो धीरे से अपना ऑर्बिट जो है वो बेसिकली जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है ना अर्थ और मार्स का दोनों का, वहां उसी के पास घूमता रहता है। जैसे ही रॉकेट फायर करते हैं वो इधर से थोड़ा सा उधर क्रॉस करता है तो मार्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको कहा। अब मैं आपको ये बाउंडेड और अनबाउंडेड ऑर्बिट के बारे में, ये टोटली मैथ्स है। देखिए मैथ्स में कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जो बाउंडेड होते हैं और कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जो अनबाउंडेड होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सर्कुलर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट, ये दोनों बाउंडेड ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट जो होता है ना प्लैनेट की तरफ, या तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा या इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। लेकिन यदि आपने उसका टोटल एनर्जी को पॉजिटिव कर दिया तो वो फिर या तो पैराबोलिक ऑर्बिट में मूव करने लगेगा या हाइपरबोलिक ऑर्बिट में मूव करने लगेगा। दीज आर अनबाउंडेड ऑर्बिट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा प्लैनेट, ऐसा कोई भी क्या कहते हैं सोलर सिस्टम का कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड, यदि वो पीरियोडिक, जैसे एक हैलिस कॉमेट है जो 76 इयर्स के बाद रिटर्न होता है, इट इज इन अ हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन, ठीक है, क्योंकि वो 76 ईयर के बाद रिटर्न कर रहा है, मतलब इट्स इन अ बाउंडेड ऑर्बिट। हैव यू हर्ड अबाउट हैलिस कॉमेट? okay, हैलिस कॉमेट, दिस इज 76 इयर्स इट टेक्स, ठीक है। लास्ट टाइम आई गेस 1976 या 86 में अपीयर हुआ था, so after 70, so basically this is in a highly elliptical orbit, हैलिस कॉमेट। तो देखिए सपोज ये एक प्लैनेट है, दिस इज अ प्लैनेट, और इधर एक सैटेलाइट है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है, दिस इज द सैटेलाइट। यदि इस सैटेलाइट का वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट v0 के बराबर है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, फाइन, दिस विल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। Always remember, if you give its velocity equal to, और v0 क्या होता है, gm/r under root, ये मैंने बताया था। Now let's understand another point. यदि टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है तो सैटेलाइट जो होगा, सैटेलाइट जो होगा स्केप हो जाएगा, मतलब हाफ mv² minus gmem upon r is greater than equal to 0. That means m gets cancelled out, so velocity is greater than 2gme upon r under root. This is called as escape velocity. So yeah, v is greater than, so v escape velocity जो होता है 2gme by r under root हो जाता है। So basically escape velocity जो होता है, it is the minimum velocity given so that it escapes the gravitational pull. Escape velocity is 2g mass of planet by r. So I can say escape velocity is √2 times orbital velocity, because orbital velocity is how much, gme by r. Yes. That means यदि कोई एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है तो उसका वेलोसिटी v0 है, तो उसको एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितना दिया जाएगा कि वो एस्केप कर जाए। सो एक्स्ट्रा वेलोसिटी टू एस्केप, दैट इज escape velocity minus orbital velocity, this is delta v, so this is like √2 minus 1 into v0, मतलब 0.41 v0, मतलब 41% और एक्स्ट्रा वेलोसिटी दीजिएगा
तो वो escape कर जाएगा। जितना भी velocity है सैटेलाइट का इसी ऑर्बिट में, just you need to give 41% extra velocity. So exactly this is for 0.414, so this is like 41.4%. If velocity of satellite is equal to v naught, तो orbit होता है circular. If velocity of satellite is less than v naught, तो orbit हो जाता है elliptical. If velocity of satellite is less than escape velocity but greater than orbital velocity, then also the orbit is elliptical. But if velocity of satellite becomes ve equal to escape velocity, then the satellite will escape and the orbit will be parabolic. If velocity of satellite is greater than escape velocity, then the orbit will become hyperbolic. That means if this is our Earth, I'm taking the example of Earth. This is our Earth, and let's say there's a satellite here, and this is moving in a circular orbit. ठीक है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है. तो कहने का मतलब इस ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगा v, दिस विल बी इक्वल टू v नॉट. तो ये सर्कुलर ऑर्बिट होगा, v इज इक्वल टू v नॉट. लेकिन आप इसके वेलोसिटी को थोड़ा सा भी कम कर देते हैं तो ये बेसिकली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने लगेगा. मतलब यहाँ पे जो v होगा ये लेस देन v नॉट होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम होगा. लेकिन इसके वेलोसिटी को थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो ये जो होगा एक बड़े से एलिप्स में घूमने लगेगा. स्टिल ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा. यहाँ पे जो v है, दिस v इज लेस देन v escape बट ग्रेटर देन v नॉट. कि ये escape वेलोसिटी से तो कम है लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा है. तो अब सर्कुलर में नहीं करेगा, एलिप्स में करेगा. अब यदि आप इसके वेलोसिटी को escape वेलोसिटी के बराबर कर देते हैं तो ये जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा. सो ये जो है दिस इज v e इज इक्वल टू v. ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ. और ज्यादा वेलोसिटी कर देते हैं तो ये एकदम और आगे जाएगा. ठीक है, और इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं रुकेगा. इसका जो वेलोसिटी होगा r इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन इसका तो वहां पे भी वेलोसिटी 0 नहीं होगा. दिस इज v ग्रेटर देन ve. दिस इज हाइपरबोलिक पाथ. तो आप एक बता सकते हैं, एक चीज आप, मैंने ये सब बता दिया कि कब क्या वेलोसिटी होगा तो कैसा पाथ देगा. आप कभी बनते हैं साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, आप रॉकेट वगैरह भेजना होगा तो ये चीज काफी काम आएगा आपके कि अच्छा मुझे धरती के escape वेलोसिटी से ज्यादा भेज रहा हूं तो मतलब ये हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा. द मोमेंट आप अर्थ का escape वेलोसिटी, यू नो द escape वेलोसिटी ऑफ अर्थ. ओके, मुझे लगा कि पता होगा. तो बेसिकली escape velocity of Earth मैं बता दे रहा हूँ. escape velocity of Earth is 11.21 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो यदि आप किसी रॉकेट को 11.21 से ज्यादा स्पीड से भेजेंगे तो वो हाइपरबोलिक पाथ हो जाएगा. आपसे पूछ देगा व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ रॉकेट व्हिच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर सेकेंड. हाइपरबोलिक. इफ इट इज मूविंग एट 11.2 सेकेंड, पैराबोलिक. Less than that, तो आइदर सर्कुलर और एलिप्टिक. तो आपको फिर कंफर्म करना होगा सर्कुलर के लिए कि वो gm/r अंडर रूट है कि नहीं. यदि gm/r अंडर रूट है तो सर्कुलर होगा.